रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह, 30 डिग्री की तमाज़त, लोग बीच पर जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। जिस तरह मौसम खुशगवार हुआ है, खुदा करे सारी दुनिया के हालात जल्द अज जल्द बेहतर और सेहतमंद हो जाए। मोहब्बत और नफरत के कशमकश वाले इस दौर में हौसला रखिए, जीत आखिरकार मोहब्बत की हुआ करती है। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक हेल्थ एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट यानी सेहत और तरक्की की माहिर डॉक्टर फराह उस्मानी साहिबा से हुआ चाहती है। वुमेन एम्पावरमेंट, राइट्स, हुकूक निस्वां के साथ औरतों की बाइख्तियार होने का अज़्म और मिशन पर बहुत संजीदगी से मसरूफ़ और काम कर रही हैं। खुश जमाल, खुश बयान और खुश खिसाल हमारी मायानाज मेहमान यूएन के साथ मुंसलिक हैं और न्यूयॉर्क में क़याम पज़ीर हैं। आइए डॉक्टर फराह उस्मानी का इस्तकबाल इशरत आफरीन के खूबसूरत शेर से किया जाए। अपनी चादर को परचम कर सकती हूँ, अपनी चादर को परचम कर सकती है औरत, एक तारीख रकम कर सकती है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश डॉक्टर फराह उस्मानी साहिबा, आदाब। शुक्रिया और बहुत बहुत जावेद साहब, और बेहद खुशी है कि रंगमंच कनाडा के साथियों से मिलके मुझे आप सब ने अपनी गुफ्तगू में शामिल किया और इतने सारे क्रिएटिव लोग जो आपके फोरम से जुड़े हुए हैं उनसे वर्चुअली मिलने और रूबरू होने का मौका मिला। तहे दिल से शुक्रिया। आपका शुक्रिया हजूर। मुझे अंदाजा है, हमारे दोस्तों को शायद अंदाजा ना हो कि आप कितनी मसरूफ हैं, मगर बहुत मसरूफ जिंदगी आपकी, उसमें आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे एक माजरत करना चाहूंगी कि मुझे कंसेप्चुअल और टेक्निकल बातें इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, और चुनाचे दरखास्त है कि आप हजरात मेरी जबान की खिचड़ी को प्लीज इग्नोर करें, और आप सबको भी मेरा आदाब और सलाम। पर्टिकुलरली जो फ्रंट रो पे बैठे हैं, आई लाइक द कमेंट दैट समबडी रोट ऑन योर वॉल on being in the front row. So hello. नहीं, ऐसा है कि फ्रंट रो वालों को भी और लास्ट बेंचर्स को भी मालूम है कि हम लोग शुमाली अमेरिका में बैठे हैं और जबान इतनी दूर होने की वजह से गंगा जमनी तहजीब जो हमारी थी उसको तो हमने हिंदुस्तान छोड़ दिया, मगर हिंदुस्तान ने हमें नहीं छोड़ा। तो वो तो साथ साथ है। और अब ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म है कि साहब उर्दू के अंदर इतनी वुसअत है कि उर्दू की जबान में अंग्रेजी हो, किसी जबान का भी लफ्ज हो, वो उसमें इस तरह जम हो जाता है कि लगता है कि साहब ये हमारी चीज़ है। और अंग्रेज़ों ने भी हमारे अल्फाज को बड़े खूबसूरती से चुराया है। हम उस पर तो शिकायत नहीं करते, तो उर्दू वालों को भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा साहब, एक बहुत ही फार्मूला सा सवाल हम हर मेहमान से करते हैं, और इस तरह से आप माशाल्लाह 107वीं हमारी मेहमान हैं। और ये इसमें इस सफ़र में बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं कोविड के हवाले से जमा हुए हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना तवील सफ़र होगा, और वक्ती तौर पे शुरू किया था मामला। तो ये जो बला वबा गिला कोविड-19 कंटिन्यू टू 20 जो है, तो इस ये आपके लिए रहमत है या ज़हमत? आपका तजुर्बा कैसा रहा? तो अगर मैं इसे एक वर्ड में कहूँ, अपना कोविड एक्सपीरियंस कहना चाहूँ, तो वो होगा लर्निंग, सीखना या सीख। सो मेरी कोरोना की स्टोरी न्यूयॉर्क में, जो कि ना कि जस्ट अमेरिका का बट पूरी दुनिया का एपी सेंटर था पिछले साल, वो मैनहट्टन के अपार्टमेंट में शुरू हुई, जहां हम कई महीने
अपनी रिहाइश से बाहर भी नहीं निकले थे। और मेरी जो स्टोरी इस न्यूयॉर्क के दौर की कोविड की है, वो पढ़ने, सीखने और सोचने की है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो लास्ट ईयर जो न्यूयॉर्क, एज आपको पता है, वाज इन अ स्टॉर्म, लाइक, और जिस अस्पताल में, इट्स सच अ कोइंसिडेंस दैट जिस अस्पताल में मैंने अभी मार्च में 2021 मार्च में मैंने अपना फाइजर वैक्सीनेशन कराया, उस अस्पताल की कोविड मोर्टेलिटी एक दिन में सबसे ज्यादा थी। अल्लाह ये रहम। एल्महर्स्ट अस्पताल है। सो इन लेकिन वहां से चल के अभी एक साल में एक पॉजिटिव स्टोरी न्यूयॉर्क की हम देख रहे हैं। सो यू सी दैट कि अभी 1% रेट ऑफ इन्फेक्शन है आज। अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ अडल्ट न्यूयॉर्कर्स ने दोनों वैक्सीनेशन कर लिया है, और माशाल्लाह से 70% का एक डोज लग गया है, और ये सिटी खुल रही है। तो मैं कहने का ये मतलब है कि इस तरह इस एक साल में ये न्यूयॉर्क कैसे बाहर निकला, इसमें सोचने की बात है और सीखने की बात है। यहाँ भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स थी कि एक अस्पताल में बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं, दूसरे में नहीं है। लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन ऑल्सो चाहे थी लेकिन वहां नहीं पहुंच रही थी। However, the city has overcome, and I can think of many reasons, you know, and it's policy based science, then communication to the people, near universal use of masks, and social distancing really strict. कहने को पूरा लॉकडाउन यहाँ कभी नहीं हुआ, जैसे पूरा हो के पुलिस पकड़ रही है, कभी नहीं हुआ। बट द कम्युनिटी respected the social distancing, and of course governance, cooperation and coordination, and last but not the least funding, पैसे, allocation of resources. तो मैं कहने का मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन की बात है। मैंने एल्महर्स्ट अस्पताल की बात करी थी, वो इसलिए कि एल्महर्स्ट जो क्वींस में है, वहां जो चारों तरफ कम्युनिटी है, उसमें 70% लोग जो हैं उस कम्युनिटी के, दे आर नॉट बोर्न इन द यूएस। देसी भी। या एंड सो ये कम्युनिटीज जो हैव ऑलरेडी हैड एक्सेस टू हेल्थ केयर, उनकी कम थी। तो कोविड की एक दूसरी चीज हम एल्महर्स्ट और न्यूयॉर्क में ही नहीं, पूरी दुनिया के डेटा में हम देख रहे हैं, इट हैज exacerbated inequalities. This is very important to remember कि थी लेकिन बहुत ज्यादा हो गई। जो जॉब लॉसेस हुए, आईएलओ की रिपोर्ट है, मिलियंस ऑफ जॉब लॉसेस। जो औरतें थी उनके वर्क प्लेस से, दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ द वर्क फोर्स, women and girls. And women and girls, I mean, because I study that subject, तो वो जो थी, खैर स्कूल से मिलियंस ऑफ लड़कियां निकली, लेकिन चाइल्ड मैरिज, एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है कि चाइल्ड मैरिज रेट्स इंक्रीज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड। Then the interesting point that I thought will be interesting for this audience was that a shadow pandemic of domestic violence emerged. So this is now evidence that लॉकडाउन में रह के औरतें अपने अब्यूजर के साथ घर में, टेलीफोन हेल्पलाइंस की ज्यादा कॉल्स आने लगी हर कंट्री में। फ्रांस से लेके मेक्सिको का डेटा देख लीजिए, कहीं का देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स का। So the phone calls to these telephone helplines, people going to the centers increased across the world. And the home, this is very reflective for me, the home which should be the safest place for a woman, we learned that khali bahar jaane se nahi hota hai problem. So the role of the home and these inequalities that we came to know, and of course that जो आप कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के तहत कि how we are all interconnected and no one is safe until, which we say, हमारे सेक्रेटरी जनरल का भी वो है, no one is safe until everyone is safe because of this interconnectivity. So these are just some reflections for me during the COVID. But I like your emphasis of your program on asking your guests to reflect on this. नहीं, बड़े बड़े, अगर सिर्फ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक क्वेश्चन को लेके मैं जो 100 लोगों के इंटरव्यूज में उसको जमा करूं तो पूरी एक किताब है कि रिफ्लेक्शंस ऑफ कोविड, कि किसका किसका क्या क्या तजुर्बा था।
तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अलार्मिंग ऑल्सो। अच्छा साहब, आपको ये बताते चले कि हमारे साया दीवार, हमारी वॉल पे आपके चाहने वाले बहुत सारे जमा हुए हैं, सब आपको याद कर रहे हैं। आपके और आपके होंगे ज्यादा। सबसे पहले तो हमारी शाहीन उस्मानी साहिबा न्यूयॉर्क से, आपकी दोस्त और हम लोगों की अलीग सलाम साथी, वालेकुम। आदाब कह रही हैं आपको। और तबस्सुम सिद्दीका साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं ये, कोलकाता से, और लड़कियों के एक एनजीओ चला रही हैं कशफ के नाम से, वो आपको आदाब कह वंडरफुल। रही हैं। हफ्सा अख्तर साहिबा, ये बांग्लादेश से देख रही हैं और ढाका यूनिवर्सिटी में उर्दू की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नीलोफर परवेज साहिबा देख रही हैं दिल्ली से, आई थिंक आपको सलाम कह रही हैं। तबस्सुम आजमी साहिबा बहुत अच्छी शायरा हैं, वो आपको आदाब कह रही हैं। और बिट्टू सिंह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट शी इज टेलिंग अबाउट। उसामा, मोहम्मद उसामा देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। कशफुद्दोजा रिसर्च स्कॉलर हैं और वो बिहार से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद एम खान साहब दिल्ली से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। बहुत सारे साथी, हम बताते चलें दोस्तों को भी कि बातें बीच बीच में हम आपके नाम भी पैगामात भी पहुंचाते रहेंगे डॉक्टर साहिबा को। मगर आज की बातें बड़ी संजीदा हैं और बहुत तवील हैं, तो इसलिए ज़रा सवालात कम, और अगर आप सवालात कर रहे हैं तो फ़ौरन जवाब से मायूस भी ना हो कि बाद में मैं डॉक्टर फराह साहब से गुजारिश करूंगा कि बाद में भी ज़रा सा देख करके कोई बहुत क्यूरियस सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है तो उसका जवाब ऑनलाइन जा करके दे देंगी। ये मेरा वादा रहा। अच्छा साहब, आप माशाल्लाह बहुत एडवेंचरस, पैशन एंड पर्पस वाली जिंदगी गुजार रही हैं। बचपन कैसा और कहाँ था आपका? जी, so really nice to meet everyone, and thank you. I look forward to the interaction. जी शुक्रिया। उसमें I like interaction and reflections. तो अच्छा, आपने बचपन का पूछा। so मैं ना 2 बहनों में बड़ी हूँ, और मेरी ओवरऑल मेमोरी अपनी चाइल्डहुड की वेरी हैप्पी चाइल्डहुड है। वाह, जो माशाल्लाह। ओवरऑल कुछ यादें धुंधली-धुंधली हैं, कुछ ज़्यादा क्लियर हैं। लेकिन मुझे याद है, मैं पेड़ पे अमरूद तोड़ने के लिए चढ़ती थी। मैं छुट्टियों में अपने ननिहाल जाना बहुत पसंद करती थी, एंड गर्मी की दोपहर में कूलर में अंदर सोना और तरबूज खाना मुझे अच्छा लगता था। और अपनी कज़िन्स के साथ छत पे गर्मी में घूमना और याद आ रहा है। और बारिश में साइकिल चलाना, और ग्वालियर जो कि मेरी बर्थ प्लेस है, मेरा ननिहाल है वहाँ का, वहाँ के मेले में चाट खाना वगैरह-वगैरह। ये सारी सो बातें ग्वालियर की हो रही हैं? नहीं, ये मिक्स्ड है। मिक्स है, अमरूद अच्छा। घर पे तोड़ते थे, हाँ, और कुछ काफ़ी चीज़ें ग्वालियर की भी हैं। हाँ, जो छुट्टियों में जाते थे हम लोग। तो ग्वालियर का ये है कि वो रूटीन था कि हर साल छुट्टी में हम दोनों तरफ जाते थे, ननिहाल भी और देदियाल भी। दैट वाज़ लाइक द प्रैक्टिस अब लकी। एवरी ईयर। एवरी ईयर my dad had an ambassador car, and we drove sometimes from Aligarh to Gwalior is like 5-6 hours. And वो so what I remember and is that I grew up feeling loved and valued, and I guess that I learned to value myself वाह। because of that. So I believe that this is extremely important. And what I remember about my father was that he always had praise for whatever effort I made. And his favorite word, I don't know if he's listening, he's 92 and he lives in Lucknow. And I asked my sister to connect him, but doesn't matter. But the word that I remember, जो मुझे उनका favorite word याद है मेरे लिए, वो था शाबाश। उनकी आदत थी शाबाश कहना और फिर अपना हाथ निकाल के मिलाना। बहुत हर अच्छी चीज बात। में जो चीज होती, इट वाज लाइक एन एक्शन। अभी भी वो मेरी बेटी के साथ यही करते हैं। So I believe I want to leave the message of shabash and building up confidence in terms of the childhood. Yeah. लड़कियों की तालीम के मामले में हमारे यहाँ जो ईस्टर्न पेरेंट्स हैं उनकी थोड़ी सी रिजर्वेशन रहती है,
आपके वालिदैन कितने इनलाइटन थे? ओके। सो मुझे तो जब से मुझे याद है बचपन से पढ़ाई, लर्निंग और एजुकेशन हमारे घर में लाइक बहुत ही पॉजिटिव वे से वैल्यूएबल समझा जाता। सो दैट वाज द कोर। एंड अगेन एंड लाइक आई सेड कि जो वैल्यूज होती हैं शुरू की, वो बहुत रोल प्ले करती हैं। सो मेरी अम्मी इसमें जो थी वो ज्यादा फोकस थी बेहतर एजुकेशन की तरफ हमें करने के लिए। और इंटरेस्टिंग ये है कि उनकी डेफिनेशन में एजुकेशन सिर्फ किताबों वाली नहीं थी। उनकी डेफिनेशन एक्सटेंड हुई कि स्किल्स भी सीखनी है। सो वाह, आई वाज सेंट टू लर्न टाइपिंग। आई वेंट टू अ सिलाई स्कूल and I even was sent to a classical music school where the teacher threw me out and said कि इनको कुछ नहीं सीख सकती है। So but I went, I went। और टाइपिंग टैलेंट जो कि मैंने उस वक्त सोचा था कि कितनी बेकार चीज सिखाई जा रही है मुझे, it turned out to be so helpful when the computers came in. I could use, easily. So the reflections that I have is, so it's that it's education beyond now। एक और तो मैंने अपनी स्कूलिंग शुरुआत मुंबई में करी। मेरे पेरेंट्स तब मुंबई में रहते थे, मेरे वालिदैन। फिर वहां से मेरे अब्बा का ट्रांसफर हो गया अलीगढ़, मुंबई से। सो उस वक्त मेरे पेरेंट्स के जो भी उनका क्राइटेरिया था, उनको अलीगढ़ में स्कूल मेरे लिए नहीं पसंद आया, मेरे वालिदैन को। और फिर उन्होंने ढूंढ के बात करके मुझे एक पढ़ाई के लिए एक बोर्डिंग स्कूल है नैनीताल में, सेंट मैरीज, वहां मुझे भेजा। हाँ, और मैं 11 साल की उम्र में थी और फिर वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म की, वहाँ नैनीताल की सेंट मैरीज में। ना उस जमाने में 1970s में लड़कियों को बोर्डिंग स्कूल भेजना बिल्कुल आम बात नहीं थी, और मुस्लिम फैमिलीज में तो बिल्कुल भी नई चीज थी। और हमारी फैमिली में भी कोई नहीं रेजिडेंशियल स्कूल में गया था। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे वालिदैन ने काफी सारे बैरियर्स का सामना किया होगा, लेकिन they overcome the challenges that was necessary, including of staying away from their children, which I only thought about later on. That was another barrier, not only this, and सब कुछ तालीम के खातिर। Now that has stayed with me. So my journey with diversity started at the age of 11, and मुझे भी हॉस्टल में रहने में डिफरेंट था। हॉस्टल की रिहाइश फॉर एन 11-year-old एंड द शेड्यूल्स, वो काफी चेंजेस थे मेरे लिए। और मैं देखती थी कि वहां पर काफी लड़कियां हैं जो खुश नहीं है हॉस्टल में, लेकिन I was having a positive experience. I thrived. I did like really well there, and I got all leadership awards and everything, and so on and so forth. So मैंने सोचा कि उसकी reason क्या है? And I like the question why. As you may have guessed in all my reflections, I am always asking for the purpose. I think the purpose is very important because it helps you to change a setback from setback to opportunity. अगर आपने purpose के लिया, so then you use the setback for the opportunity कि आपने कैसे interpret करा उसको। और मेरे लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि बचपन में जो देखा और सीखी हुई वैल्यूज हैं वो आपको हर वक्त इन्फ्लुएंस करती हैं, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड को। तो अगर आप उनको कमतरी का एहसास नहीं दिया जाए, तालीम, encouragement, feeling love, direct experiences हो, they continue to shape your life, throughout. वाह, सब और बहुत सारे साथी जमा हो रहे हैं। नियाज जयराजपुरी साहब सलाम कह रहे हैं आपको, और मोहसिन खान हमारे बड़े अच्छे नॉवलिस्ट हैं और लखनऊ से देख रहे हैं, लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। एहतिशाम जमील साहब हमारे भांजे साहब हैं, कराची से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और शाहबुद्दीन अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, दोहा कतर से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अब्दुल्ला दाऊद साहब सलाम कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। नाहिद सुल्तान मिर्ज़ा साहिबा सलाम कह रही हैं, और नाइला अहमद कमाल हमारी बड़ी अच्छी दोस्त और ये एम्बेसडर हैं बच्चों के, यानी स्पेशल
किड्स के हवाले से, और खुद डॉक्टर भी हैं। नाइला देख रही हैं, वालेकुम अस्सलाम नाइला साहिबा, ग्लैड टू बी हियर एंड हियर टू यू बोथ। शाहीन उस्मानी कह रही हैं, ट्रू लाइफ टर्न्स मीनिंगफुल विद अ वेल डिफाइंड पर्पस, वेल सेड। अच्छा साहब, तो हमारे दोस्त संजीदगी से देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल सब सुन रहे हैं, बातें थोड़े से लाइट सवाल कर लीजिए। हाँ, इनके सवालों से, कमेंट से पता चलता रहता है। आप माशाल्लाह टॉपर रही हैं और यूएनओ की पहली मुस्लिम खातून डायरेक्टर भी हैं। गायनेकोलॉजी से हेल्थ एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट के सफर की कहानी क्या है और कैसे है? यानी हॉस्पिटल से निकल के आप हॉस्पिटल बनवाने के मामले में कैसे करने लग गई ये सारा कुछ, ये प्लीज बताएं। क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि फिर स्कूल मेडिकल से आपने अलीगढ़ से किया? हाँ, अलीगढ़ हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। सो आफ्टर आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग, तो मैं फिर प्री मेडिकल मैंने अलीगढ़ विमेंस कॉलेज में ज्वाइन किया, प्री मेडिकल। और मैंने फिर अलीगढ़ में 12 साल स्पेंड करे। I grew up, then I studied, I became a doctor there, then I found my husband there, then I got married, and I got my first job as a lecturer in obstetrics and gynae in AMU. And I also got my first child, who was born in Aligarh in 1989. तो वो 12 साल थे मेरी जर्नी के अलीगढ़ में। So वो journey, so I was basically like after my studies, I landed up as a lecturer in AMU in 1989. So उस वक्त जर्नी का जो टर्न आया, तो my husband was posted in a different city and would continue to work in different cities. And so I left the job. I resigned from the job in AMU in 1989 and I joined the Provincial Medical Service, जो गवर्नमेंट की सरकारी यूपी वाली होती है। उसमें ये है कि फिर उसके साथ हम कहीं भी ट्रैवल करके पोस्टिंग साथ में कर सकते हैं। और वो तो उसके तहत जो पोस्टिंग जब हमारी हुई, I was posted in a very remote tribal district called Sonbhadra in Uttar Pradesh. It's on, Eastern Europe, where my husband was managing the cement corporation, etc. And I joined the district service there. And that was my first experience to really remote work. And I was the only gynecologist in that पूरे जिले में उस वक्त। हाँ, and so, but I was motivated, even though बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहाँ लेक्चरर का जॉब कोई छोड़ के वहां जाता है या जो भी था। But again, like I said, मेरी स्टोरी ये है कि to make the best out of जो मिल रहा है, and that's how, and it was working out both ways. So जब मैं वहां पहुंची, रॉबर्ट्सगंज नाम है उस शहर का, सोनभद्र का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है रॉबर्ट्सगंज। तो वहां पर then I being the only female doctor, I told them that I want to, I am all right, willing to do all the camps across the district and learn. I had never seen tribal populations living in the far interiors and in the camps and all. So us waqt, that was quite a turning experience in my life. And I realized when I interacted that जो हम कहते थे जब हम टर्शरी अस्पताल में थे, तो अगर कोई लेडी देर में आती थी, हम उसका बच्चा नहीं बचा पाते थे, तो हम नाराज होते थे और कहते भाई जल्दी क्यों नहीं आई, उनकी भलाई के लिए कि हम तुम्हारा बच्चा नहीं बचा पाए और ये इतना ब्लड चला गया है क्या क्या। तो जब मैं वहां गई तो मैंने कहा कि मैं गलत कह दी थी, ये वहां पहुंचने में यहाँ से इनको जितना टाइम और जितनी इश्यूज हैं उसकी तो किसी को आइडिया है ही नहीं। how could I even tell the girl inside the labor room? If I had to tell, I should have gone outside and told, like, listen, why you have brought. So the social and behavioral dimensions became very stark of healthcare, very stark. Why a person is not going to the hospital has nothing to do with, so it has to do with her agency, with, the decision making process, the transport, it has to do with the road, it has to do, it is so intersectional. अब तो सब बात करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी की, हमारे जो यूएन का पूरा फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का,
उसमें हम कहते हैं कि हाउ हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन सब कनेक्टेड है, जेंडर. And so now we have this latest framework, which is a 2030 agenda, but this I'm talking about in early 90s. So the intersectionality of these things came to me, and I got interested. I started getting interested in this aspect of health, to say कि individual medicine से impact ये भी बहुत important है. और एक मेरी learning है कि जो subject preventive and social medicine जो medical career में अच्छे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल पास भटकते ही नहीं है, जैसे मेरे वाले अगर मेडल्स आ रहे हैं क्या क्या, वी कंसिडर दैट दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड. We have to go and do this hi-fi medicine, surgery and all. So SPM was considered, it shouldn't be according to me public health, but it was considered one of the subjects, like whoever doesn't get post graduation anywhere goes there. So वो जो public health का रुझान था वो देख के और वो study करके और वो घूम के वो हो गया. But still it wasn't formed up and I was like ठीक है अभी तो कर ही रहे हैं ये. But it came to my back of the mind, and then I joined when we got posted back to Lucknow. I joined the project because I had got interested in that, and they were looking for a gynecologist. It was a USAID project, and across Uttar Pradesh. And obviously no gynae was willing to join because no gynecologist who leaves clinical to join. But because of my interest in that, I actually initially only joined on, मैंने 2 साल के लाइक डेपुटेशन पे गई. लेकिन ये हुआ कि उस प्रोजेक्ट में जो कि पूरा पब्लिक हेल्थ और मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था, हेल्थ मैनेजमेंट एंड उसमें रह के I liked it and I wasn't missing not doing clinical medicine. So I get lots of people who ask me for advice on this shift. Many people are interested. And I tell them that you need to reflect because clinical medicine offers a lot of, one-to-one praise and one-to-one this, while this one doesn't. You're behind the computer. तो इस तरह की कहानी थी. और फिर वहां से मैंने रियलाइज किया कि उधर बात करके लोगों से एंड ऑल कि if I have to go into this line, I need some technical information. Just my OBGYN will not work. And so that's when I applied and for a master's degree in health policy and planning. And, I applied for fellowships, et cetera, with a lot of perseverance on the forms. And then I got a World Bank fellowship to go and do my master's in health policy and planning. Uske baad in London School of Economics, I learned about international development. I learned about the availability of, UN jobs, etc. And they actually help you to during the career process for you to, get the job of what you are looking for. So that's how I landed up in the UN International Civil Service. वंडरफुल स्टोरी. दिल्ली से शफी अयूब साहब, आई थिंक JNU में प्रोफेसर हैं हमारे शफी अयूब भाई, आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं. नाइला अहमद कमाल कह रही हैं कि अलीगढ़ इज़ डेफिनेटली एन इमोशन. रेखा सूर्या साहिबा बहुत ही मायानाज गुलकारा हैं, क्लासिकल, और हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं, आपको आदाब कह रही हैं और कह रही हैं कि फराजी was a wonderful host in New York as well as being so competent in her work. असद फैसल फारूकी साहब आदाब कह रहे हैं और मासूमा रूह वाला हमारी दोस्त हैं, बॉम्बे से देख रही हैं, मुंबई से, वो आपको आदाब कह रही हैं. सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं उर्दू की, आपको आदाब कह रही हैं. और बहुत सारे, तारा इकबाल साहिबा बहुत अच्छी शायरा हैं, बड़ी शायरा हैं, और राय बरेली से देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं. यूपी वाले बहुत से आगे हैं सब. चलिए आपको एक फॉरेन का नाम फिर सुनाते हैं, बड़ी दूर से आपको आदाब आया है, और वो है फरीदा अहमद साहिबा देख रही हैं. मैं इनका हमेशा भूल जाता हूँ, बहुत ये नाराज होंगी. फरीदा अहमद साहिबा देख रही हैं एम्स्टरडैम नहीं, ये जहाँ, अच्छा मैं बताऊंगा अभी ये कहाँ से देख रही हैं. तबस्सुम आज़मी साहिबा देख रही हैं, और फरीदा साहिबा आपसे हमने कहा था कि ज़रूर लिखा करें कि कहाँ से देख रही हैं. हमारी उम्र का तकाजा, मैं भूल जाता हूँ कि कौन कहाँ से देख रहा है. तो वंडरफुल स्टोरी. बहुत अच्छा साहब, लोग कहते हैं कि जावेद नाम के लोग अक्सर शरीफ हुआ करते हैं,
मुझे भी ये खुशफहमी है कि मेरा नाम भी जावेद है इत्तेफाक से। तो जावेद उस्मानी क़िबला के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखिए ज़रा देख तो नहीं रहे हैं। तो कह तो रहे थे कि लॉग इन करेंगे, तो यहीं कहीं है। हाँ। एनीवे, तो so yeah, no, this is actually an important question because one of my conclusions, and it's a unique experience in my life which I get from many people, how I have been able to handle work and life balance. एंड मैंने ये बताया नहीं कि मेरी शादी एक्चुअली पढ़ाई के दौरान ही हो गई थी, और मैंने फिर एमडी और सारी पढ़ाई, ये मास्टर्स लंदन वंदन का सब शादी के बाद किया है। वाह। So, उसमें मुझे ये कहना है कि लाइक मैरिज इज नॉट अ बैरियर इफ यू आर विद द राइट पर्सन, एंड सो इफ द पर्सन respects you fully and both partners are like taking decisions together, you know, you have challenges, you face challenges, like मैंने आपको एक लोकेशन का चैलेंज बनाया जब मैंने छोड़ करके जॉब वहां गया। फिर जब मैं नेपाल में पोस्ट हुई तो इन्होंने जॉब छोड़ा और डेपुटेशन पोस्ट ली नेपाल एम्बेसी में, जो कि थोड़ी सी इनके पोजीशन से लोअर लेवल थी, लेकिन हमने कहा बच्चे छोटे हैं, हम साथ रहेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो दैट इज लाइक अ परफेक्ट पार्टनर in terms of, so he took positions so it wasn't me who was always changing and taking. तो यहाँ जब मैं न्यूयॉर्क में पहले पोस्ट हुई, फिर एक साल बाद फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, he took time off and he joined the World Bank for 3 years. These are side positions from his main career which he took. So कहने का ये मतलब है कि आप person, so choosing a person who is extremely important in this sort of relationship. और मेरे हिसाब से going forward, हमारे ज़माने में तो ये बहुत नई बात मानी जाती थी कि मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे हैं, कभी साथ रह रहे हैं, कभी ये रह रहे हैं और चल रहे हैं। और मुझे हर वक्त काफ़ी सारे बार लोग पूछते थे कि भाई अब आप छोड़ के कब आ रही हैं रहने यहाँ, मतलब हो गया, शौक पूरा हो गया, आ जाइए अब। तो the person who is closest, who is giving you that strength, you know, is most important. Regarding जो आप कह रहे हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स का, तो जब मैं मास्टर्स में जा रही थी, सो यू वोंट बिलीव इट, के फेलोशिप की सर्च में हेल्प किसने किया, ढूंढने में, एप्लीकेशन में। सो इफ यू हैव एंगेजमेंट लाइक दिस देन यू कैन मेक इट वर्क, अदरवाइज इट इज नॉट इजी। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनके बारे में कि हम जब वो पढ़ रहे थे लंदन में, जावेद पढ़ रहे थे, he also did his masters in social policy from London School of Economics, और अलीगढ़ के बाद हम वहीं गए हैं। तो उसके जब हमारा बच्चा भी छोटा था, कुछ महीने का था, and so I took leave to go there, and then I was doing some work in the evenings for 3 hours at a doctor's clinic. तो अब we had to make that work. So ये डिसाइड हुआ कि ये जो भी क्लासेस इनको लेनी है वो 3 बजे से पहले खत्म होनी चाहिए कोर्स पूरा करने के लिए, कि भाई आप 4 बजे से पहले आइए, फिर आप बच्चे के साथ बैठिए, तब ये जाएंगी। तो वैसे तो ठीक था, लेकिन 3 बजे तक क्लासेस खत्म करने के लिए पहले इनको एक क्लास लेनी पड़ी पूरा कोर्स करने के लिए, एंड दैट क्लास वाज ऑन जेंडर एंड डेवलपमेंट। सो माय हस्बैंड एक्चुअली स्टडीड इन डेप्थ gender and development, and we discussed it even before I formally studied it. So that was hugely helpful. You can talk to, so we can say that he took the class because of the 3 p.m. border, you know, but the fact was that he was willing to take. So he and another friend, they were the only 2 men in the class, but he tells me it was very enriching for him to know these issues, even in the United States, even in the United Kingdom, etc. So basically I have many stories of the supportive partner issues, but basically I think you've got the hang of things, and the point that I want to say about, you know, that you cannot have the burden of unpaid care and child care on one person in a partnership if both partners have to, you know, be on equal patri. साहब स्वीडन, हमारी फरीदा अहमद साहिबा स्वीडन से देख रही हैं, और स्वीडन में हमेशा स्वीडन भूल जाता हूँ, हालांकि मैं इनका मेहमान रह चुका हूँ स्वीडन में, बोलना नहीं चाहिए था। तो स्वीडन से आपको आदाब कह रही हैं,
और फारूक इंजीनियर साहब उर्दू के हमारे शायर हैं, जयपुर से आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब नाजिया कोकब साहिबा दिल्ली से देख रही हैं शायद, ये भी सलाम कह रही हैं आपको। और नायला कह रहे हैं कि सपोर्टिव एंड रिस्पेक्टफुल स्पाउस इज सो वेरी सिग्निफिकेंट, यू बोथ आर डेफिनेटली अ वंडरफुल एग्जांपल फॉर मेनी ऑफ अस। जी साहब, आपने ये साबित किया कि जो हमारा कोट था कि लोग कहते हैं कि जावेद नाम के लोग शरीफ हुआ करते हैं, जैसा विद जी एक्सेप्शंस, जरूर, आई एक्सेप्शंस एग्री। जरूर हुआ करती हैं। और ये भी साबित हुआ कि साहब हर मर्द के पीछे एक कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, इसी तरह कामयाब प्रोफेशनल खातून के पीछे या उसके साथ एक शरीफ मर्द भी होता है। ये बात साबित हुई। तो आपके मगरिब में किसी ने, जी, हाँ, बताएं। आपके किसी ने रिफ्लेक्शन किया था अलीगढ़ का किसी कमेंट में। हाँ, तो हाँ, तो मुझे इसी एजुकेशन और उसमें याद आया। एंड लाइक आई एम अ प्राउड alumni and I think Aligarh has contributed a lot to women's education. जो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या कमेंट था, बट and I think that recognizing and allowing women to excel. अलीगढ़ में ही मुझे अपने हस्बैंड मिले और वो भी अलीग हैं। उन्होंने भी अपना बैचलर्स वहीं से किया है। और बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस इवन अब्रॉड लाइक आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत दिन तक विमेन नहीं अलाउ करी थी अपने कैंपसेस में। आप देख लें येल का कैंपस, प्रिंसटन का एंड ऑल। तो recognizing and allowing women to excel in and their agency and also because the data जो है अपने especially Muslim women का enrollment in formal education and all, ये and literacy rate में अभी भी काफी कम है। So the point I want to make here to on this aspect is that I got the opportunity, like you mentioned, to top in the All India Medical Examination in AMU. So AMU allowed a woman to be recognized. So it's not vice versa, the person studied and all. It's also the other issue. And so उसमें ये है कि और जो वो तराना है जिससे हम लोग, ये शाहीन भी सुन रही हैं, शाहीन उस्मानी, जो तराना है, इन्होंने इसका बड़ा अच्छा क्लिप बनाया था कि ये मेरा चमन, जो इंस्पिरेशनल तराना है यूनिवर्सिटी का, वो हम लोगों के लिए बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज है। बिल्कुल। लेकिन मजाज लखनवी साहब ने ये कहा था कि जो अब्र का जिक्र किया था, अब्र का जिक्र किया था, वो अब्र का जिक्र जो उन्होंने फरमाया था, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बरसने की जरूरत है। So I want to leave you with that thought that education needs to be scaled up, particularly for girls, because we are talking about empowerment and education. और ये जो है दो वर्ड्स जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहती हूँ वो है शाबाश और अब्र जो है उसको बहुत ज्यादा बरसने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों को ये मैं बताता चलूं कि फरा उस्मानी साहिबा और जावेद उस्मानी साहिब जो हैं क़िबला, इन दोनों से हमारी रिश्तेदारी है और ये शुरू में मुझे बताना चाहिए था। और वो रिश्तेदारी अलीगढ़ की है कि हम सब बफज़ल ताला अलीगढ़ से फारिग हैं और खुश हैं और वी आर प्राउड टू बी अ लीग। तो और नए दोस्त हमारे साथ शामिल हुए। संगीता खन्ना अहमद आपके न्यूयॉर्क से देख रही हैं, और संगीता के बाद उस्माना रईस यंग पोइट, शी इज़ वाचिंग फ्रॉम दिल्ली, और परवेज़ अख्तर साहब कोलकाता से देख रहे हैं। और इस तरह से दोस्त काफ़ी जमा होते चले जा रहे हैं। बातें बहुत दिलचस्प, अलीगढ़ की यादें भी बहुत हम लोगों की ज़िंदगी का बेशकीमत सरमाया है। शाहीन उस्मानी साहिबा न सिर्फ अलीगेरियन है बल्कि तराना भी लहक लहक कर माशाल्लाह गाती हैं। ये देखा हुआ है, समझे। और अच्छा, तो मगरिब में प्री नप्शल अरेंजमेंट जो है ये बड़ी पुरानी बात हो चुकी है। क्या मशरिक में यानी इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में मॉडल निकाहनामा का कॉन्ट्रैक्ट
या इसकी तब्दीली बकौल आपके इसकी जरूरत है और क्यों है? हाँ, मैंने इसका ज़िक्र किया हुआ है कई सेशंस में, और एक हमारा ग्रुप भी है विमेंस का, टू स्टडी कि क्या व्हाट इज़ आउट देयर। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ निकाहनामा which is like from thousands of years is already there. So already Islam has a way in which you can negotiate and you have जो मेहर का concept है ना, it's nothing new, it's like part of it. So what we don't have is the power of negotiation in the both parties. तो इसलिए जो एक पार्टी जो भी पावर में ऊपर है, उन्होंने कह दिया जो है और वो फिर बन गया, उसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं होता है। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज दैट कि इसके हुकूकात कहेंगे या लाइक यू नो द राइट्स जो है वो तो दिए गए। नाउ इफ द बैलेंस वाज इक्वल देन द पार्टीज and can easily discuss and put in there, it's all within the normal thing, the options to say that listen, we agree that you will not take a second wife, we agree that you will not do triple talaq, you can write whatever. But so the main point about the model nikahnaama is that you are give the empowerment and the information that you have a right to negotiate, number one. Then the second is that which many organizations are doing is to have many options, क्योंकि सबको नहीं पता ना कि क्या क्या हो सकते हैं options of putting in there. Not everybody has to agree and tick box on everything, but whatever works for you. We did not have a model nikahnaama with in my or any such discussion, but we had an oral one. It's actually another interesting story about our relationship. So my parents, and like I told you, we got married when I was studying. So my parents were interested in education, and they could not take a risk at that the person that I marry drops my education ball. That was not acceptable to them and to me. So this was discussed, not written, but it was discussed, and we will, you know, agree, and that the person respects that you are educated and all. That was actually a plus. So you're not taking any risk. So what I mean by this, the model nikahnaama is to have those options for discussion, to know your right. पता ही नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता कि हम कह सकते हैं, ये नहीं कि बस मौलाना जो लास्ट में लेके आए उस पे जो भी जल्दी से हो गया. It should be discussed, and it should be like thought through. It should be decorative, you know, and that comes from my parents' nikahnaama, which was in Persian and had all lots of flowers and all, which my grandfather made. It should be considered not like मेरा है एक इतना सा कागज जो कि मौलवी साहब ने अपनी कॉपी से फाड़ा, जो हमारा वाला है, फाड़ के उसमें लिख करके दिया. So that's basically what I mean by that. This concept, which actually came later in the West, was already there, but its use, उसकी you know use और उसको adaptation and कर रहे हैं लोग बहुत सारे काम, but there is need to create more awareness on, you know, this. उन्होंने बहुत सारे, जो मुंबई का ग्रुप है, उन्होंने बहुत लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया है. जी साहब, कोविड की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ साथ डिवोर्स के केसेस हर जगह बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान, हर जगह. कोई इसकी वो है, रिसर्च है कि ज्यादा कहाँ है और इसकी वजह क्या है? Okay, so I mentioned कि women's issues जो कोविड में है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, अर्ली मैरिज ये आ रहा है. So मुझे बहुत ज्यादा, आप अच्छा रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, because one needs to then look at it. मुझे बहुत ज्यादा I would see it as related to the domestic violence issue and lockdown. So what was happening is that because data on domestic violence is known to be increased, yeah, and so it's the cycle. So the factors in relationships inside the house जो आ रहे हैं, जो discuss हो रहे हैं, because of these other pressures. So जो domestic violence के causes आए हैं, वो आए हैं like, you know,
including taking alcohol, mental stress, losing your job, poverty. So all these things are happening. So now you lost the job, the guy just runs away and divorces. So it is like, it's quite scary. And कि ये जो package of issues आ रहे हैं, in terms of mental health is like a huge issue. There's data on organizations, including in ours, about how many staff members are asking for counseling services, how many are taking time off from work. So that's known because everyone is suffering, every family in India. We have suffered in our family too. We have lost 3 family members, extended family, not core, but yes, we have. So everybody is suffering from this, and the different things are adding to the stress. But I don't have the data, but it's interesting you raise it. I will explore on the exact nature of the, yeah. आजकल ही फॉर शी कैंपेन काफी जोर पकड़ रहा है। मगरिब में हम लोग इसके समवॉट आदी हो चुके हैं। मैं खुद अल्लाह गवाह है कि बर्तन बड़े दिल लगाकर धोता हूँ, मगर मशरिकी मर्दों के बारे में क्या कहेंगी आप? कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के जो हजरात हैं, इवन लिविंग इन द वेस्ट, और वहाँ की जो डेटा है वो क्या कहती? So this campaign he for she was from UN Women जो शुरू किया था, उसमें मैं वेलकम कर रही हूँ जो आपके शोरा हैं आज इस प्रोग्राम के. So you can go to there we have a formal campaign that's on the website, and उसमें क्या होता है कि any person actually can go on there and it says that मैं ये 5-6 चीजें करूँगा, and you sign off and become a logo and you become recognized, and every day they add the numbers कि आज इतने 1,500,000 ही फॉर शी हो गए हैं क्या क्या. सो वो तो हाँ, वो कैंपेन जो स्पेसिफिक कैंपेन है यूएन विमेन का जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें सब अपने स्पाउसेस और फ्रेंड्स और सबको कहें कि इट इज अ स्टार्ट. So that commitment is a start, which is what this campaign is about. At least you learn that you are two wheels to make the car or the train run. And so the main core is that you cannot win if half the team is not in the game. So जो he's हैं उनको ये बताना है या communities को बताना है सबको कि अगर community को आगे बढ़ना है या group को आगे बढ़ना है, तो if half your team is not empowered and not in the game and not contributing either intellectually or whatever, you will not win the game. So if you want to win the game, you look at a basketball game, आधी टीम में अगर पैर में दर्द है, वो नहीं खेल पा रही, तो कैसे जीतेंगे? तो अगर हम उस conceptual framework से देखें, और so back to your question, there needs to be more information and on this aspect, not if I'm a dominant person and I can make the decision and that is the macho thing. So what we are calling is that you need to change the definition of masculinity. And lots of ads are doing, and they're very good ads also जो इस पे काम कर रहे हैं, lots of communication advocacy. It's a whole topic in itself on defining, removing toxic masculinity, and then also giving this conceptual framework that you cannot win. So you need to partner. And those younger generation में तो मैं देख रही हूँ, वहाँ भी यहाँ भी younger generation में, इनफैक्ट आप उसका फर्स्ट साइन देख लें, अगर आप मैरिटल वो एड्स जो आते हैं ना अपने इंडिया में शादी वाले, उसमें देखें तो पहले तो क्या चाहिए था, क्या गौरी कॉन्वेंट एजुकेटेड एंड ऑल. इट्स नाउ बिकमिंग प्रोफेशनल. So people are writing that they would like professional and equal intellectually women. So I think the work related to, of course, much more needs to be done, but the trend is in the right direction, I would say. In the next generation, the trend is in the right direction. जीनत रशीद, हाँ, कोलकाता से हमारी छोटी बहन जीनत रशीद देख रही हैं, आपको आदाब कह रही हैं. इखलाक आहन साहब JNU के प्रोफेसर हैं, वो देख रहे हैं. और अंसर कुरैशी साहब अलीग हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, वो भी आदाब कह रहे हैं. आपकी एक किताब है, बल्कि कैंपेन है आपका एक, और जो है फूल पत्ती का काम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट. इसके बारे में कुछ बताएं. अच्छा, तो
क्या इसके बारे में पूछा है या वो राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग के बारे में? नहीं, फूल पत्ती पहले अच्छा, बात फूल कर पत्ती रहे में हैं। डाले, अच्छा अच्छा. So yeah, so this is actually a labor of love. So this is it's very interesting, and that I have and developed a love for handicrafts. So that's my side activity that I do, and I have done work related to the mapping of the handicrafts of Uttar Pradesh into one repertoire with a group, etc. So when I started this work, I was also surprised कि ऐसे कैसे दो अलग-अलग चीजें मुझे पसंद आ रही हैं, बिल्कुल unrelated हैं. And but then one finds that this is called, this is recognized in literature as people having multiple passions and then trying to connect them through some issue. And so the connection here was women artisans and women groups and all, जिससे ये किताब लिखी गई है. And also it is the story. तो अलीगढ़ में in fact you want more about this story is कि जब हम लोग बोर्डिंग स्कूल चले गए तो मेरे मम्मी लाइक फिर से अकेली भी थी. That's the time she developed an interest in reviving this art, which is in Aligarh. So those of you who are in Aligarh or who are interested in handicrafts would know about this very specific type of applique work, which is found only in Rampur and in Aligarh. And there was no documentation in this. So I'm in a flight, I think from Nepal to Delhi, and उस flight magazine में बहुत सारी embroideries की बात हो रही है. And I grew up with this embroidery, and I'm saying कि ये क्यों नहीं mentioned है? जैसे कि आपने भी कहा कि it's not well known. And so that was my motivation. So I wrote this story about this work. I did some research in Aligarh, and I talked to the artisans. I even traced the artisans that my mother worked for. So this is in her memory. She passed off in 2010. And so that's the time when I did this research and I put this together. So it's basically trying to tell the story of this art. It's trying to promote the artisans, which are basically, Muslim women who are largely not educated, and what is their empowerment story through getting this funding and keeping it for their dowry and all is a very, very interesting story of their, work. And so I would, like to promote more people wherever this is being done to examine, to support the women artisans who अगर are ये working. किताब की कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी था कि ये किताब जो है ऑनलाइन अवेलेबल है और अगर कोई लेता है तो उसको कोई मैच भी करते हैं, वो प्रोजेक्ट क्या? Yeah, so like I said, this is a non-profit venture, and right from the beginning, this book, even its hard copy and all the sales from this book, all the money from the sales from this book is given to women artisans. What I did was during COVID, I got a collaboration with another NGO who would, um, supply and work on like get oxygen cylinders and concentrators with the funds that we provided, and also add some more funds to this initiative. And so this project say खरीदे गए हैं cylinders, concentrators, वो बताते हैं कैसे use हो रहे हैं. Before the COVID also, all the profits from this work along with Safar were being used in Aligarh for a project to develop, you guys might like that, to develop innovations in फूलपत्ती. तो उस प्रोजेक्ट में हमने क्या फंडिंग करी थी कि एक ग्रुप से ये कहें कि आप जो ट्रेडिशनल डिजाइन नहीं, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है ना नया इनोवेशन करने की. इफ यू फंड एंड यू से चाहे कुछ भी बने, चाहे फेंक भी जाए, हमने पहले ही खरीद लिया. तो हमने ऐसे उनसे कहा कि आपसे पहले ही खरीद लिया है मटेरियल, आप जो भी बने. And so they are experimenting, and it's very interesting. The designs have already come of calligraphy in applique. वाह. तो हाँ, बहुत खूबसूरत बनाई है. तो कैलीग्राफी में उन्होंने, जो उनकी एक कैलीग्राफर हैं वहीं अलीगढ़ का, वो जो सर सैयद हाउस के पास एक इंस्टीट्यूशन है, उससे उन्होंने इन फूलपत्ती आर्टिसंस और उनके डिजाइनर को बताया और उसमें किया. और उन्होंने एक्चुअली एक पहला दुपट्टा विच वाज सो नाइस ऑफ देम, मेरा नाम दुपट्टे पे एप्लीक करके बनाया. सो साइड में ऐसे बॉर्डर करके. एंड देन शी टोल्ड मी कि लॉट्स ऑफ पीपल लाइक that for the weddings.
So they Wow. started getting orders. And so they had never done this. So I'm happy for, looking at some innovations and all through this project. So that's like, I do a lot of voluntary activities. So this is part of that. Yeah. वंडरफुल, वंडरफुल स्टोरी। अच्छा, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये एप्लिक वाला काम, जो मैं समझता था ये लखनऊ का है, मगर लखनऊ आप कह रही हैं कि ये अलीगढ़ की देन है। अलीगढ़ मशहूर है ताला और मक्खन के लिए, यूनिवर्सिटी के बाहर दो चीज़ें हैं वो। बट दिस इज सच अ सेंसिटिव और बहुत ही खूबसूरत काम होता है वो। तो सफ़र प्रोजेक्ट है ये आपने बताया, जिसके तहत ये हो रहा है काम। अच्छा, हमारे दोस्त मोहम्मद काजिम साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उर्दू के, देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही अच्छी गुफ्तगू। और ये हाँ, आजकल आप एक बड़े और बहुत ही दिलचस्प दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, जो कि इससे बहुत बड़ा है, और वो है राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग। इस किताब का ख्याल कैसे आया और इसकी ज़रूरत क्यों? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो इसकी तफसील बताएं साहब। So this is like my deep passion. And तो ये इनिशिएटिव मैंने लास्ट ईयर शुरू करा था, एक्चुअली कोविड के दौरान। And it's part of, like, of course, it's part of my whole work and all this on improving women's agency. But काफी रिसर्च है जिससे हमें पता चला है कि women are more likely to join a particular field if they see people like themselves involved. Okay, so we need these role models on pictures. So if you want to promote more women joining science or becoming politicians, or so there's full research now to show that in particular fields people want to see themselves involved, and that is hugely motivating. So that's like one of the reasons. The second reason is, and it also stems from our concept in the UN Sustainable Development Framework of reaching the furthest behind. हम पूरे ग्लोबल में हमारी जो प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो ये है कि यू हैव टू टारगेट द फर्दर्स्ट बिहाइंड। हेल्थ सेंटर अगर हम उस मोहल्ले में डाल देंगे जहां सारे लोग अस्पताल वैसे ही जा रहे हैं, so for everything you need to look at the data and see who's furthest behind, and support initiatives towards that. So who's furthest behind in terms of minorities, marginalized communities and all. So there's strong rationale that you need to do that. The third reason is a need to change the perception of women. So if there's a perception कि ये तो ट्रिपल तलाक चल रहा है, उनका तो ये चल रहा है, इनके तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, like this community of women doesn't exist, and so we need to the stories, and I would like to congratulate you too also, Javed साहब, कि जो stories हम issues की निकालते हैं, जैसे आपने निकाली autism की, आपने इमिग्रेंट इश्यूज की, तो जो स्टोरीज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं वो हम किसी और तरह डेटा वेटा से कर सकते हैं, लेकिन वो अलग है. So the rationale behind this is like to curate the stories of actual women and people who have done something which will inspire a woman in Kerala when she sees कि हम केरला के हमारे स्कूल से इन्होंने ये किया और अब ये अमेरिका के मेडिकल हेल्थ सेंटर में टॉप रिसर्चर हैं. तो वो कनेक्शन बनाना है. And so when I found, as I asked, and so this is very interesting information is coming out of this research. So we are in this research stage, and I welcome nominations of inspiring women that you have, and you can visit this website, which has all the details from politics, from corporate, media, doctors, lawyers, from all walks of lives. कहाँ है, कहाँ नहीं मिल रही, तो इसमें ट्रेंड्स भी आ रहे हैं, कहाँ मिल रही हैं, and what are the root causes. So the idea of this book is to then, synthesize from across the districts, etc., and to see the trend. So we have a global inspirations model. There is a children's book also online, which has, क्योंकि children's book में characters नहीं होते, minorities और जो कि बच्चों को देखें और वो कहें कि ये characters हैं. And trend analysis, in fact, we have, like I said, it's work in progress, but trend analysis is coming. For example, if you look at women who have taken up interesting professions like shooting, you have there women
who are like sharpshooters. You have somebody who's like a biker, and many of these, which was like very interesting for me. You find that the role of their family and in providing access को एक उनकी आर्म्स की दुकान थी और उन्होंने अलाउ कर दिया उनको शूटिंग करना. So it's not the talent, it is the facilitation. The point I'm trying to make, the role which I said in the beginning of facilitation of motivation in reaching, in it's not only कि भाई genetic पैदा हुआ है. So the nurturing part is equally important and amazing. So for me, this has been such an experience, which I said, this is like passion. It is not even work anymore. That the amazing type of women stories you hear every day, that people are sharing every day in, you know, and there's like a network of colleagues across the different states, and they have given feedback, including young colleagues who are curating this repertoire, that हमें नहीं पता था, हम मध्य प्रदेश भोपाल में रहते हैं, हमें नहीं पता था कि इतने सारे हैं, तो दूसरों को क्या पता. So putting this together to put it in one shop and including people living there don't know, and so the repertoire is ongoing in different states. So आप हजरात कोई जान पहचान के जो आपके लिए इंस्पायरिंग रोल मॉडल हैं, उनका जरूर नॉमिनेशन भेजें. एंड इसी सिलसिले में मुझे एक और ख्याल था जो कि आपके लिए भी है जावेद साहब, कि मैंने एक ड्रामा देखा ऑन दिस हेयर ऑफ ब्लैक विमेन. इट्स बॉल्टीमोर स्टेज है जिसमें कि टिकटेड ड्रामा था. आप ऑनलाइन $15 ऑनलाइन टिकट है, तो उन्होंने पूरा रिकॉर्डिंग थी और आप टिकट खरीदे. सो उसका न्यूयॉर्क टाइम्स में एड वो जो आता है ना, राइट अप रिव्यू आया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो उसके तहत फिर मैंने ये देखा, तो उसमें उन्होंने क्या किया था उस ड्रामे में कि द इश्यूज दैट ब्लैक women face because of their hair in the workplace was the theme. And they had different women coming and sharing like such passionate issues ke bas like bilkul heart rendering. And so I thought that, you know, the issues that I'm seeing here in this repertoire that is there in this one is like so amazing. It's, you can like curate something better even than you know, because the theme is like wider of what are the issues. And so मैंने चंद साल पहले आपका ड्रामा देखा था इमिग्रेंट, और उस पे यहीं पर ही लाइव ही देखा था. तब तो लाइव था, हाँ, जिसमें कि जी दास्तान गोई, जिसमें कि आप इमिग्रेंट्स की कहानी आपने कैसे बनाई थी. सो आई थिंक लाइक यू नो you have the power of this to examine these issues along with your team. So yeah. And then the other part that I thought was that कि एक डेनमार्क में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि अब दुनिया के शायद 50 देशों में हो गई है. उसको वो कहते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट. तो ह्यूमन लाइब्रेरी में क्या होता है, अच्छा आपने पढ़ा हुआ है, तो ह्यूमन लाइब्रेरी में क्या होता है कि हम जैसे लाइब्रेरी से बुक ले रहे हैं, आप लाइब्रेरी से एक पर्सन बोरो कर रहे हैं, पर्सन की स्टोरी 30 मिनट की, इश्यू बेस्ड. तो जैसे कि आप रेफ्यूजी हैं, एंड द आइडिया इज टू रिमूव द प्रेजुडिस एंड स्टिग्मेटाइजेशन थ्रू दिस human library and the stories of people. So stories are really, really important. And, you know, and data is important. So we say that, you know, data and the story has to come together. Just saying कि इतने data में इतना वो है. And that is when it works. ये जो आप बोरिंग ह्यूमन बुक के नाम से यहाँ टोरंटो में ये हो रहा है. Oh, wonderful. हाँ, I was very interested in it. और हमने ये इंडिया के कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज में बताया, अपने लेक्चर्स के दौरान बताया. मगर हमारे यार लोग जो हैं बड़े ढीले दोस्त हैं हमारे सब, तो उनको बताया कि भाई दिस इज सच ए इंटरेस्टिंग नॉट ओनली ह्यूमन बुक, बच्चों के हवाले से भी लाइब्रेरी इज सच एन इनलाइटनिंग प्लेस. इतनी अच्छी बात. अब लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी कौन जाता है, हमने कहा कौन जाता है, उसको ऐसा बनाइए कि लोग जाएं. हमारे यहाँ जो वेस्ट में बच्चों को कूपन्स दिया जाता है, पिज्जा के स्लाइस दे रहे हैं कि बच्चों को माएँ जो है लेके आ रही, कि उसको बच्चा भी बड़ा इंटरेस्टेड होता है कि साहब लाइब्रेरी. हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं नहीं. और अब यकीन मानिए, आई हैव बीन टेलिंग देम, बहुत दफ़े हमने बताया है, बहुत दफ़े ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत प्रमोट किया है.
अब वो करते ही हैं कि उन्होंने कहा नहीं साहब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो दास्तान गोई के साथ ये वाला आइटम भी आप कीजिएगा। तो ये मसला ये है कि आप कर दीजिए, हम कुछ नहीं Okay. करेंगे, ये है। मगर इट इज इंटरेस्टिंग, करना Yeah, चाहिए। but we can look at a group under like your guidance. Like I said, very young people are there in this. I mean, on the women part. हाँ, Yeah, we can think नहीं मैं about it. करूंगा Like, जरूर, दैट्स वेरी uh, इंटरेस्टिंग पार्ट, so there बहुत are जरूरी like है। young women here, and maybe you can we can link them up with some in Canada. Sure, It's good sure, for cross sectoring. So in बिल्कुल। fact, yeah, and in fact, the suggestion has actually come from a young lady in Delhi to like Good. join cross. Yeah. वी शुड डू इट। अच्छा, हमारी माएँ जो हैं, अम्मी जान अक्सर हाउस वाइफ हुआ करती हैं, मगर वर्किंग मदर्स के लिए बच्चों की परवरिश और रोल मॉडल होना कितना आसान है, या ये आसान नहीं? ये बताइए, यू आर द बेस्ट एग्जांपल। So नहीं तो मैं बहुत बहुत दिन तक मेरा एक रिग्रेट था, और कि लाइक मैं बच्चों को टाइम नहीं दे रही हूँ एडिक्वेटली, मेरा था रिग्रेट बिकॉज ऑफ ट्रैवल एंड ऑल। और मेरा गिल्ट था, मैं जो फराज है मेरा बेटा, उसकी ग्रेजुएशन में जा पाई थी बिकॉज आई वाज इन सम मिशन इन सम कंट्री, एंड यू नो आई वाज मिसिंग समथिंग। सो बहुत साल तक मेरा था, लेकिन अब नहीं है। तो मैं बताऊं क्यों नहीं है, विच इज मे बी यूजफुल फॉर यू नो, क्योंकि सबको होता है, जो करती हैं माएँ उनको ये गिल्ट होता है। तो वो 2 रीजन से नहीं है, कि एक तो ये कि क्या कहते हैं, from my personal experience in my research, that both my children landed up doing well for themselves, and they, you know, they went to the best schools, and mashallah, they are like, you know, so they were in Yale, Columbia, Duke, MIT, you name it, and so that after many years when that happened, the guilt decreased. So it wasn't like all that bad. Then the best one was that I saw a groundbreaking study, which I really recommend to everybody, by a Harvard professor called Kathleen McGinn. Kathleen McGinn, but if you just do work in women study Harvard, you'll get it. Which very systematic study has followed the children of working moms. Yeah. And to look at their high achievement and their happiness. तो वो स्टडी ये कहती है कि क्या कहते हैं, the children of working moms landed up to be higher achievers, and in terms of happiness they were equal. So ये नहीं कि उसकी वजह से sad हुए. So and it has studied the pathways के क्यों कैसे हुए. So the high achiever pathways come that mother who is, you know, going out and having the information, then transfers it, gives the ideas to the children and the reflection. So like I said, maternal employment does not affect kids' happiness in adulthood, and they like, so just working moms need to be happy and, you know, and give quality time. So the important part is not the duration. It is the quality time. And मेरे पास एक और एग्जाम्पल है क्वालिटी टाइम का, लाइक जैसे मैंने कहा, क्योंकि मैं इससे गिल्टी थी बहुत साल तक, कि जब मैं ऑफिस जाती थी, एक्चुअली सोनभद्र का ही है, तो जब बच्ची छोटी थी, तो जब मैं कार में बैठती थी अस्पताल जाने के लिए, सो द नैनी वुड ब्रिंग द चाइल्ड, एंड द चाइल्ड वुड वेव टू मी, a 1-year-old child, 2-year-old child would wave to me bye bye, and I would go. And so my neighbor, who was, you know, a housewife, she told me कि यार आपके तो बड़े मजे हैं, जब मैं जाती हूँ अपनी बच्ची से बाजार तो मुझे तो छुप के जाना पड़ता है. तो because the mother is there foreign, तो वो बाजार भी नहीं जा सकती उनकी अम्मी बच्ची को छोड़ के, क्योंकि उसकी आदत नहीं है. So there are many nuances to these stories to say that does it help an independent, but now finally some research is coming. So on that, and like I said, I suffered from this, but it's good that now later on I can, you know, for these students, my lived experience is also Catherine McGill's study, and the study is there, and so yeah, I Wonderful. hope. आपके नजदीक हुजूर वाला, व्हाट इज सक्सेस, कामयाबी क्या है? So
the success definition can be, in different ways. People can define success in terms of, like, a step ladder way of achieving the next step in, funds or whatever levels of economics. So, but for me, like, I've thought about it, and maybe it was from, some trainings that I did in Cranfield and the others, which helped me to reflect. And then I define for myself success as the ability to impact or make a positive difference in people's lives. So my definition of success is that if I can make a difference in whatever sphere, in that's for me is a successful life. Because I can have all the other steps, and I have had them, of acquiring degrees and acquiring financial success and acquiring that. But those are just like वो अलग steps हैं, वो success वाले steps नहीं. They help you to achieve the real success. वाह, जिंदगी से कोई गिला? हाँ, एक तो यही था जो मैंने आपको बताया कि भाई बच्चों वाला, जो कि ठीक हो गया. That was your regret. वो रिजॉल्व हो गया बाद में. और हाँ, एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि वो जब मैं ये पॉलिटेक्निक जाती थी, आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दिस पर्सन, सो आई विल टेल दिस स्टोरी. तो ये टाइपिंग वाले स्कूल में जाती थी मैं गर्मी की छुट्टियों में. So there used to be a lady in a yellow Volkswagen Beetle in Aligarh, and I don't know who she is. I don't know till now. She drove a yellow Volkswagen Beetle, and she wore white Christ saris. That is Zahida Zaidi. Okay, so we can tell her. Yeah, so no she wore but it was and I saw her many times in the parking space, getting out of the yellow Beetle and wearing the sari. And as a child, I imagined that I would own a yellow Beetle. I did imagine that I would own a yellow Beetle, and I would be like as independent and professional as this person, whoever she is. I still don't know who she is, like you're telling me. So, because it was like in passing. So the yellow Beetle is in my mind, and I have not bought it. So और फिर ये हुआ कि मैंने ड्राइविंग भी गिव अप कर दी. सीखी थी, लेकिन मैंने ड्राइविंग भी गिव अप कर दी for whatever reasons. I started using Uber and all this in town. And तो मैंने एक बार सर्च भी करा मैनहट्टन में कि येलो बीटल्स मिल रही हैं, काफी अच्छी मिल रही थी, सस्ती भी मिल रही थी, लेकिन खरीदी नहीं. So that's, I think, like it's at back of my mind, this yellow beetle story. Then the other one is कि मैं like काफी सारी किताबें खरीद लेती हूँ, लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है बहुत सारी जो मैंने खरीदी. So I am waiting that inshallah when I retire, and I would like to read that. They are on handicrafts, and they are on these extracurricular things that I feel about, and I am hoping that I will be able to read whatever I have bought. Yeah. नहीं, मैं बताऊं कि 70s में मैं अलीगढ़ में था, तो प्रोफेसर जाहिदा जैदी, अच्छा, उनकी येलो बीटल थी उनके, because she was the only lady, और he was talk of the town. उनके साथ मोहतरमा क्रिस्प साड़ी पहनती थी और बीटल चलाती थी, और साथ में माशाल्लाह 4 स्क्वायर सिगरेट भी पीती थी. तो हमारी टीचर थी वो, तो उस वक्त हमारी प्रोफेसर रह चुकी हैं. तो हम भी बड़े शौक से. She have a long plait. Yeah, हाँ. A choti. हाँ. Oh, then it's the same person. Then it's the same. हाँ, वही, क्योंकि अलीगढ़ में और किसी के, अलीगढ़ में जो चीज होती है एक एक होती है. Okay, so today I have discovered the name of the person. वो ऑक्सफोर्ड से होकर आई थी, और she has a very charming and very impressive personality. बहुत ही दुबली पतली सी थी. तो जाहिदा जैदी साहिबा, चलिए उनकी याद हम लोगों ने किया उनको. और उनके अलावा और कोई नहीं था वहां, मुझे अच्छी तरह याद है कि बीटल और किसी के बाद नहीं. बग भी हम लोग कहते थे कि she is driving a bug. तो no, we did a search for a yellow beetle downtown in New York once. और खैर ये भी इंटरेस्टिंग था कि मिल रही है.
हाँ यहाँ पर पुरानी मिलती है ना गाड़ियाँ, हाँ मिलती हैं, तो इट्स अ यहाँ पे कलेक्टिबल येलो बीटल आइटम मिल नाउ। भी गई थी। इट्स अ कलेक्टिबल But it's आइटम। actually more a conceptual thinking. हाँ So the concept of a child or young person that time, seeing some empowered, not knowing the person, but a look which was empowering, of driving yourself, of carrying yourself, was an image. So I again say that are sort of images that we need to tell more people, that people can do such a thing. Okay. बहुत से हमारे लेट लतीफ दोस्त क्लास में देर से आए हैं वो भी आपको आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद सालेहीन, इज अ फिक्शन राइटर फ्रॉम कोलकाता। हाशिम मोहम्मद भाई, ही इज आल्सो अ जर्नलिस्ट फ्रॉम कोलकाता। ये सब वहाँ से आपको आदाब कह रहे हैं। और जुगल कोल बहुत अच्छे एक ड्रामा थिएटर आर्टिस्ट हैं और दिल्ली में हमारे दोस्त हैं, वो भी देख रहे हैं, बेस्ट विशेस कह रहे हैं आपको। तो इट्स अ वंडरफुल डिस्कशन वी आर हैविंग, और पुरानी बहुत सारी फाइल्स खुली हैं आज। आपकी जिंदगी मोहतरमा एक दिलचस्प जज्बे शौक से सरशार दास्तान है। अपनी याददाश्त या मेमोयर लिखने का ख्याल नहीं आया आपको? अभी नहीं, बट इंशाल्लाह रिटायर होकर के कुछ स्टोरीज तो लिखेंगे। उसकी So, प्लानिंग तो होनी चाहिए। हाँ, नहीं, अभी तो नहीं हुई है, अभी नहीं हुई। Some articles, if somebody asks me to write on small ones, I write, but I haven't thought of it like not so much about myself, but how the story can translate to helping could be a way, and more generally about many women together. The one that I'm doing, जो मैं कर रही हूँ उसमें, उसी में ही अपने जो है एक्सपीरियंशियल नॉलेज और वो डाल के, बट सर्टेनली द जो आपने कहा कि स्पेशली जो मैंने कंट्रीज में ट्रैवल किया है, अफगानिस्तान, सोमालिया और वो सब, वो बहुत एज्ड है मेरे माइंड में, दिस एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड, and so I would like to in closing also mention that it's a rich, international development is difficult, and like I said, when I went to a mission in Afghanistan, मुझे तो जो भी लग रहा है, भाई फैमिली को भी अजियत होती है जब आप जाते हैं ऐसी जगह। बिल्कुल। And my ex-boss, actually, he lost his life in a bomb in Afghanistan, and so and Iraq, I did missions in Iraq. And so the learning across countries in Africa to know that while things are very different, there's also things that are the same. And across countries, and that was, it's it will be my take on that story, of my take on my reflections on that, including some little traumatic experience that you go through during this travel, and you learn about the sadness in life, and yeah. नहीं, जरूर लिखें आप। अच्छा था, शाहीन उस्मानी साहिबा कंफर्म करिए कि यस इट शुड बी प्रोफेसर जाहिदा जैदी। याद आ गया। Okay, the yellow beetle. I have found a name for my yellow beetle. उनकी दूसरी बहन थी साजिदा जहदी, और मेरे ख्याल में साजिदा जहदी भी हमारी बहुत हम मानती थी थिएटर की वजह से, ड्रामे की वजह से। और एक दफ़े ये हुआ कि साजिदा जहदी साहिबा ने मुझे, दिल्ली में मेरा प्रोग्राम था तो उन्होंने बहुत शौक से अलीगढ़ बुलाया, तो मैं अलीगढ़ गया और ज़ाहिदा जैदी भी आई। तो मुझे देखते उन्होंने कहा, कह रहे तुमने इसे बुलाया, ये तो मेरा शागिर्द है। जी, वो समझ रही थी कोई और जावेद दानिश होंगे। जी, तो she was That's great. really nice. That's really nice. Very nice. She was very great. मोहम्मद अनायतुल्लाह नदवी साहब भी देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और जितने हजरात देर से आए हैं उनको पता चलना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी डिस्कशन मिस की है, तो बाद में इसके पूरे प्रोग्राम को आप देखना ना भूलें। अच्छा हुजूर, Are there any questions? और हमारी गुफ्तगू में अगर कोई ख़ास बात रह गई हो तो वो आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ़ बता सकती हैं कि जी ज़रूर। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतने सारे बहुत ही क्रिएटिव लोग जो आपकी कम्युनिटी में है, उनका इंटरेस्ट इस वाले सब्जेक्ट में और इसमें आना, बहुत बहुत शुक्रिया सबका।
और जैसे मैंने कहा कि मैं जहाँ भी पहुंची हूँ बहुत सारे लोगों के कंधे पे बैठ के पहुंची हूँ, एंड सो माय ड्रीम इज फॉर फ्यूचर दैट मैं वो जो माउंटेन है उसको और थोड़ा सा और ऊंचा बना दूं, ताकि जो लड़कियां उस माउंटेन पे चढ़े वो और दूर देखें. So that is my my wish, that everyone to, so a small contribution that I do इसमें is के particularly because UN में नहीं है इतनी women अपने country or community से. So I do mentoring session for जो बच्चियां हैं जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं, बहुत स्पेसिफिक हैं उनको, और 1-to-1 या ऐसे ग्रुप में बात करना चाहती हैं. So I do volunteering sessions on the weekends. I have a program with actually Ali AMU where they have women who to professor in English department, and she sets it up. And so I'm opening that. Obviously, it's not like 1-to-1, but it's some groups have some young girls who would like to have a conversation with me, like volunteer conversation and have questions which may help them. I'm happy to, feel free to reach out to me. And like I said, I'm happy to do my little drop in the ocean. So I just want to stay safe, everyone, and take care. ये जो जिस तरह लाइब्रेरी का मामला हमने बहुतों को कहा, इसी तरह ये जो वॉलंटियर वाला मामला हमारी कम्युनिटी में बहुत कम है. दे शुड कम फॉरवर्ड और करना चाहिए. अच्छा साहब, हमारी नाजरीन बहनों और हमारी सहेलियों के लिए आपका क्या पैगाम? बहनों के लिए so दोनों के लिए है, बहन and भाई, because like I believe that the empowerment issue cannot be solved alone. Women's agency and women's the equal part. My favorite thing is that if half the team is not in the game, but the half the team which is not in the game cannot do everything to get into the game. So my message is actually to everyone and to motivate. So बहनों के लिए, you motivate your next generation of girls, and like I said, जो अब्र है उसको अभी तो बहुत ज्यादा बरसना है. There's a lot of do and miles to reach. मोहतरमा डॉक्टर फराह उस्मानी साहिबा, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया कि आज हम सबको आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त दिया बल्कि अपने बावकार सफ़र का हम सफ़र बनाया. दोस्तों और नाजरीन, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब आप हमारी आवारगी के साथ होते हैं. अगले हफ्ते सनीचर 12 जून हमारे मायानाज मेहमान होंगे क्लासिकल ग्लूकार मोहतरम अमजद अली खान साहिब, किराना घराना वाले. इनके साज और आवाज़ से सरशार होने के लिए ज़रूर शरीक हों. आवारगी का मुख्ता भी दोहरा लिया जाए कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और अहबाब को यकीन दिलाया करें कि ये शरीफाना आवारगी है. अब तो जाते हैं मैं कदे से बुत कदे से मीर. फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया. खुशबाश. Did you hear it? Oh my God. Yes. नहीं भाई, चलो आप बात देख लो. चलो तुमने सुन लिया होगा यहाँ से. I wanted you to see it.